injury in the 1 hour session. So here after completing this session, you will be able to write an essay on the necrosis, apoptosis, types of degeneration, and you can write a note on fat stains, intracellular accumulations. Short notes में difference between necrosis, apoptosis, free radical cell injury, radiation injury, difference between dystrophic and metastatic calcification, hypertrophy, hyperplasia differences, and trigger effect, tabby cat heart, role of sirtuins in cellular aging and atrophy and metaplasia. Okay, now let's talk about the necrosis. Necrosis is defined as the cell death of tissues due to intracellular protein enzymatic digestion of lethally injured cells, usually accompanied with inflammatory reactions. So here what is happening, the tissue is dead because whatever the proteins were there inside the cell are digested, and whatever the contents were there inside the cell are digested such that the cell has injured and died. Usually it is accompanied with inflammatory reactions. What are the causes? There are five causes of necrosis. What are the 5 causes? Hypoxia, physical agents, chemical agents, microbial and immunological agents. Now let's talk about microscopic findings. Microscopic findings में increased eosinophilia देखोगे, eosinophils increase होंगे, ग्लासी होमोजीनस रहेगा क्योंकि अंदर का जो भी था सेल के अंदर वो डाइजेस्ट हो गया, तो माइक्रोस्कोप में आपको ग्लासी दिखेगा एंड होमोजीनस. डेड सेल्स रिप्लेस्ड बाय माइलिन फाइब्रिल्स एंड फॉस्फोलिपिड्स. ठीक है, फागोसाइटाइज्ड बाय अदर सेल्स, जो भी बच्चा कुछ रहेगा दूसरे सेल्स खा लेंगे. फैटी रेसिड्यूज कैल्सिफाइड हो जाएंगे. सेल्स कैरेक्टराइज्ड डिसकंटिन्यूटी इन प्लाज्मा ऑर्गेनल मेम्ब्रेन, डायलेटेड मिटोकॉन्ड्रिया. न्यूक्लियर चेंजेस में आपको क्या देखने को मिलेगा? कैरियोलाइसिस मीन्स डीएनए लॉस ड्यू टू डीएनएज एंड आरएनएस. कैरियोलाइसिस में क्या होगा? डीएनए एंड आरएनए लॉस हो जाएगा. पिकनोसिस, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कैरियोलाइसिस क्या है, पिकनोसिस क्या है, कैरियोरेक्सिस क्या है? तो कैरियोलाइसिस में क्या होता है? डीएनए लॉस होता है क्योंकि डीएनए से आरएनए एंजाइम डीएनए को डाइजेस्ट कर देते हैं. पिकनोसिस में न्यूक्लियस कंडेंस हो जाता है, क्लम्पिंग ऑफ क्रोमैटिन होता है. न्यूक्लियस पूरा कंडेंस होकर जो भी क्रोमैटिन है वो क्लम्प हो जाता है. कैरियोरेक्सिस में क्या होता है? इरिवर्सिबल फ्रैगमेंटेशन ऑफ न्यूक्लियस. न्यूक्लियस पूरा ही फ्रैगमेंट हो जाता है. ठीक है, सो कैरियोलाइसिस, पिकनोसिस एंड कैरियोरेक्सिस. लाइसिस मतलब तोड़ना, कैरियो मतलब डीएनए का कंटेंट टूट रहा है, पिकनोसिस मतलब कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमैटिन, क्लम्पिंग, न्यूक्लियस कंडेंस होगा, क्लम्पिंग ऑफ क्रोमैटिन. कैरियोरेक्सिस इरिवर्सिबल फ्रैगमेंटेशन ऑफ द न्यूक्लियस. अब टाइप्स देखते हैं, नेक्रोसिस के टाइप्स क्या होते हैं. तो नेक्रोसिस के टाइप्स होता है कोएगुलेटिव, केसियस, लिक्विफैक्टिव एंड फिब्रिनॉइड और एक फैट. सो कितने टाइप्स के हो गए नेक्रोसिस? कोएगुलेटिव, केसियस, लिक्विफैक्शन, फिब्रिनॉइड एंड फैट. तो जो कोएगुलेटिव नेक्रोसिस एक है, केसियस एक है, लिक्विफैक्टिव एक है, फिब्रिनॉइड है, फैट है. तो फिब्रिनॉइड वाला आपको एसएलई में देखने को मिलता है. एसएलई क्या है? सिस्टमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटस. आगे आप ये पढ़ोगे ऑटो इम्यून डिजीजेस में, माइक्रोबायोलॉजी में. तो ये फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस देखने को मिला. ये चैप्टर इज़ द बेस फॉर एवरी चैप्टर. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पैथोलॉजी. तो नेक्रोसिस में क्या है? कोएगुलेटिव नेक्रोसिस, केसियस नेक्रोसिस, लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस, फिब्रिनॉइड एंड दी, और क्या है? फिब्रिनॉइड एंड दी फैट नेक्रोसिस. कोएगुलेटिव में क्या होता है? आर्किटेक्चर ऑफ डेड टिश्यू इज प्रिजर्व्ड. डेड टिश्यू ऐसा था ऐसे ही बना रहेगा. फोम टेक्सचर, डीनेचुरेशन ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन, एंजाइमेटिक प्रोटीन्स, डेड सेल्स रिमूव बाय फाइगोसाइटोसिस. डीनेचुरेशन ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन, एंजाइमेटिक प्रोटीन्स डीनेचर हो जाते हैं. इस्कीमिया ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन लीड टू दिस नेक्रोसिस. नेक्स्ट ब्रेन में इस्कीमिया हो जाता है ना ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन. इस्कीमिया इज व्हाट? डेड ऑफ द सेल. व्हाई डेड occurs? Because there was no blood supply. Area known as infarct, common in heart, kidney and spleen. हार्ट, किडनी, स्प्लीन, जहाँ पे इन्फेक्शन की वजह से हार्ट का इन्फेक्शन होता है, किडनी का, स्प्लीन का, तो वहाँ पे क्या होता है? कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होता है. जो आर्किटेक्चर ऑफ डेड टिश्यू इट इज़ प्रिजर्व, टेक्सचर फॉर्म रहेगा, डीनेचुरेशन ऑफ द प्रोटीन्स रहेगा, स्ट्रक्चर एंड एंजाइमेटिक प्रोटीन्स, and dead cells removed by phagocytosis. Ischemia due to obstruction lead to this type of necrosis.
area known as infarct, common in heart, kidney and spleen. Microscopically nucleus and cytoplasmic details lost. ठीक है, that is tombstones and swollen cell. Cytoplasmic details lost, nucleus lost, swollen cell. Cell is the swollen cell. Caseous necrosis में occurs in tuberculosis infections. Tuberculosis infection क्या है? टीबी. टीबी में क्या होता है? caseous necrosis होता है. टीबी में क्या होता है? caseous necrosis होता है. टीबी में ये याद रखना caseous necrosis होता है. चीज़ लाइक अपीयरेंस रहता है. चीज़ लाइक अपीयरेंस इज नथिंग बट caseous necrosis. It combines features of both coagulative and liquefactive necrosis. Microscopically structureless lysed cells collection, amorphous debris, inflammatory border, granuloma formed होता है. इन्फ्लेमेटरी बॉर्डर ग्रैनुलोमा. तो माइक्रोस्कोपिकली जो स्ट्रक्चरलेस वहाँ पे जिसमें अपना कोआगुलेटिव नेक्रोसिस था वहाँ पे स्ट्रक्चर प्रिजर्व्ड है, मॉर्फोलॉजी प्रिजर्व है. यहाँ पे स्ट्रक्चरलेस लाइस्ड सेल्स कलेक्शन, amorphous debris enclosed within inflammatory border, that is granuloma. कॉमन साइट्स लंग में होता है. टीबी लंग में होता है, लिम्फ नोड्स, इंटेस्टाइन्स, टीबी ऑफ एनी ऑर्गन. मोस्ट कॉमन इज द लंग ऑफ टीबी लंग का केसेस नेक्रोसिस. यहाँ पे ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन होता है. स्ट्रक्चर लाइज हो जाता है, स्ट्रक्चरलेस लाइज सेल कलेक्शन होता है, अमॉर्फस डेब्रिस कलेक्शन होता है. डेब्रिस एंक्लोज्ड विद इन इन्फ्लेमेटरी बॉर्डर्स. डेब्रिस एंक्लोज्ड इन इन्फ्लेमेटरी बॉर्डर कॉल्ड द ग्रैनुलोमा. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? नेक्स्ट इज लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस. डेड सेल्स डाइजेस्ट हो जाते हैं. सीनस इस्चेमिक इंजुरी इन CNS, पैको फंगल इन्फेक्शंस. टिश्यू डिग्रेड बाय हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स. लिक्विड विस्कस मास मिलता है. यहाँ पे सेल इतना डाइजेस्ट हो गया कि वो लिक्विड बन गया. क्रीमी येलो डेड लिक्विसाइड्स पस फॉर्म होता है. माइक्रोस्कोपिकली सिस्ट कंटेन्स डेब्रिस एंड माइक्रोफेज हो जाता है. ग्लियोसिस, इन्फ्लेमेटरी सेल्स एंड फाइब्रोब्लास्ट मिलते हैं. तो ये CNS में देखने को मिलता है जहाँ पे पूरा लिक्विड बन जाता है. टिश्यू डिग्रेडेशन बाय हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, लिक्विड विस्कस मास बन जाता है पस की तरह. डेड सेल्स डाइजेस्ट हो जाता है. फिब्रिनाइड नेक्रोसिस में क्या है? सीन इन इम्यून रिएक्शंस इन्वॉल्विंग ब्लड वेसल, जैसे कि सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटस. इम्यून रिएक्शंस में एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स लॉस्ट इन वॉल्स ऑफ आर्टरीज. आर्टरीज के वॉल्स में ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स लॉज हो जाते हैं. दिस विद फिब्रिन लीक्स आउट टू फॉर्म ब्राइट पिंक अमॉर्फस स्टेन इन H&E स्टेनिंग. H&E स्टेनिंग में ब्राइट पिंक अमॉर्फस स्टेन मिलता है. ठीक है. माइक्रोसिस हाईली लाइक डिपॉजिट ऑन वॉल न्यूक्लियर डेब्रिस ऑफ न्यूट्रोफिल्स. फैट नेक्रोसिस में क्या होता है? बेसिकली फोकल एरियाज ऑफ फैट डिस्ट्रक्शन. सीन इन एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस. पैंक्रियाटाइटिस में माइक्रोस्कोपिकली नेक्रोसाइज्ड फैट सेल्स आर क्लाउडी इंक्लूड्स बाय इन्फ्लेमेटरी cells. Calcium soaps amorphous granular basophil. Activated pancreatic lipase in pancreas and peritoneal cavity. The enzyme liquefy fat in peritoneum, splits the triglycerides into fatty acids. Fatty acids combine with calcium saponification. सो यहाँ पे क्या होता है? बेसिकली जो अपने पैंक्रेटिक एंजाइम्स होते हैं पैंक्रियास में इनएक्टिव रहते हैं. बट यहाँ पे अगर गलती से एक्टिवेट हो जाता है तो पैंक्रेटिक एंजाइम्स तो वो अपने ही पेरिटोनियम को जो फैट का रहता है उसको डाइजेस्ट कर देता है. अब जो ट्राइग्लिसराइड स्प्लिट होगा फैटी एसिड्स में, फैटी एसिड्स कैल्शियम से कंबाइन करेंगे फिर सपोनिफिकेशन हो जाता है. ठीक है. अब ट्रॉमेटिक फैट नेक्रोसिस दैट अकर्स इन फैटी टिश्यू. एग्जाम्पल फीमेल ब्रेस्ट टिश्यू एब्डोमेन एज अ रिजल्ट ऑफ ब्लंट ट्रॉमा और सर्जरी. लाइक पैंक्रेटिक फैट नेक्रोसिस इट इज़ नॉट एंजाइम मीडिएटेड. ठीक है. तो ट्रॉमेटिक फैट्स जैसे कि माँ लग गया या कोई सर्जरी हुई तो यहाँ पे भी नेक्रोसिस होता है. तो ठीक है. दिस इज़ द 5 टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस. फर्स्ट वाला इज़ द कोआगुलेटिव नेक्रोसिस, जहाँ पे आपका मॉर्फोलॉजी इंटैक्ट रहेगा, आर्किटेक्चर इंटैक्ट रहेगा. यहाँ पे डिनोचुरेशन होगा, यहाँ पे आपको इस्चीमिया की वजह से होगा. इनफैक्ट और माइक्रोस्कोपिकली टॉम्बस्टोन्स दिखने को मिलेंगे. न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक डिटेल्स आर दी लॉस्ट. सेल इज स्वॉलन. साइटोप्लाज्मिक न्यूक्लियस डिटेल्स लॉस्ट है लेकिन सेल का मॉर्फोलॉजी इंटैक्ट है. केसेस नेक्रोसिस जो ट्यूबरकुलोसिस में देखने को मिलता है. यहाँ पे ग्रैनुलोमा. ग्रैनुलोमा मीन्स इन्फ्लेमेटरी बॉर्डर्स एंड अब नॉर्मल अमॉर्फस डेब्रिस रहता है एंड कलेक्शन ऑफ द स्ट्रक्चरलेस लाइस्ड सेल. कॉमन साइट्स लंग, लिम्फ नोड्स, टीबी ऑफ एनी ऑर्गन. ओके. लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस किस में होता है? लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस इस्चेमिक इंजुरी इन CNS ब्रेन में.
और फंगल इन्फेक्शंस में भी होता है, बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शंस। डेड सेल्स डाइजेस्टेड होते हैं, इतना डाइजेस्ट हो जाते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से कि लिक्विड विस्कस मास बन जाता है, यानी क्रीमी येलो होता है, डेड लिकोसाइड्स पस बन जाते हैं। माइक्रोस्कोपिकली कैसे दिखते हैं? माइक्रोस्कोपिकली सिस्ट कंटेन डेब्रिस एंड मैक्रोफेजेस। सिस्ट जो है ना उसमें डेब्रिस रहता है एंड दी मैक्रोफेजेस रहते हैं, ठीक है। ग्लियोसिस, इन्फ्लेमेटरी सेल्स एंड फाइब्रोब्लास्ट। तो से आपको लिखना होगा कि माइक्रोस्कोपिकली आप ग्रैनुलोमा देखोगे, केसीएस में माइक्रोस्कोपिकली यहाँ पे आप टॉमस्टोन्स देखोगे, माइक्रोस्कोपिकली सिस्ट देखोगे जिसमें डेब्रिस एंड मैक्रोफेज दिखेंगे, ग्लियोसिस एंड दी इन्फ्लेमेटरी सेल्स एंड फाइब्रोब्लास्ट। फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस में माइक्रोस्कोपिकली आप एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस और वॉल में लॉज होने की वजह से माइक्रोसैलिन लाइक डिपॉजिट्स ऑन वॉल, न्यूक्लियर डेब्रिस ऑफ न्यूट्रोफिल्स देखोगे। एंड फैट नेक्रोसिस में fat necrosis you will see the fatty acids. So apoptosis. Definition of apoptosis is a pathway of cell death that is induced by tightly regulated suicide program in which cell is destined to die active intrinsic enzymes that degrade the cell's own nuclear material and cytoplasmic protein. Apoptosis is a pathway of cell death that is induced by a tightly regulated suicide program in which cells destined to die activate intrinsic enzymes that degrade the cells. वहाँ पे cells were killing themselves, right, by the hydrolytic or other enzymes because of the intracellular proteins and enzymatic digestion were occurring. In the apoptosis, it is programmed cell death. Here, the cells die after activation of intrinsic enzymes that degrade the cell's own nuclear DNA and the cytoplasmic proteins. It is genetically programmed cell death. This one is the programmed genetically. It is an active process. Causes, physiological and pathological process. Let's talk about first physiological. So physiological, to eliminate cells that are no longer needed by the body and to maintain a steady number of various cell population in tissue. The cells which are not needed and to maintain the population of cells in a tissue. Example in embryogenesis, destruction of cells during implantation, organogenesis, etc. During organogenesis, what happened? The finger webs, they were joined like this, and the fingers were joined like this. The webs were there in between them, so these webs are digested and the fingers are separated. Syndactyly is prevented. Involution of hormone dependent tissue upon hormone withdrawal. So endometrial cell breakdown during the menstruation cycle. So that is also an example of apoptosis. Cell loss in proliferating cell population, immature lymphocytes in the bone marrow. Elimination of potentially harmful self-reactive lymphocytes. Before or after they have completed their maturation, they are eliminated. Death of host cells after their function. Neutrophils in an acute inflammatory response. Pathological, to remove cells that are injured beyond repair so as to prevent stating host reaction and limit the collateral damage. Example, DNA damage, mission of misfolded protein, viral infection, duct obstruction, atrophy of glands.
So here what is happening, to remove cells that are injured and that cannot be repaired at all. So to prevent eliciting host reaction and limit the collateral damage, apoptosis is done. So DNA damage either directly or by production of free radicals like radiation, cytotoxic drugs or hypoxia. Accumulation of misfolded protein due to mutation in proteins or extrinsic factor free radical injury, accumulation in ER, endoplasmic reticulum, ER stress, then apoptosis occur because of the misfolding of the protein. What is a viral infection? Loss of infected cells due to apoptosis introduced by virus as an adenovirus in the HIV infections. Duct obstruction, atrophy of glands like pancreas, parotid and kidney because the duct has obstructed. Retinitis pigmentosus, apoptosis of rod pigment. Pigment in your eye. Retinitis pigmentosa. Transplant rejection, graft versus host reaction. Now let's talk about the enzymes involved in apoptosis. What are the enzymes involved in apoptosis? Then important one is the mechanism of apoptosis, and then intrinsic pathway we will be studying. Extrinsic pathway, inhibitors, execution phase, removal of dead cells, morphological features of apoptosis, and we were doing then the third, that is the types of degeneration. Okay, let's talk about the apoptosis enzymes. So enzymes in apoptosis is the caspases and the endonucleases. Caspases, the cleave protein near aspartic acid residues. So protein that are present near the aspartic acid residues. Caspases digest that, cleave that. Okay. Endonucleases, they produce internucleosomal cleavage of DNA. 180 to 200 base pairs DNA fingerprint. So caspases are like initiate caspase, 18 extrinsic, 9 intrinsic and 10 execution phase. Caspase 3 most important. Okay, so enzymes. So we were talking about the enzymes involved in the apoptosis. The enzymes involved in apoptosis are very important. That is caspases and the endonucleases. Caspases are the cleave protein near the aspartic acid residues. Endonucleases, they produce internucleosomal cleavage of DNA. Internucleosomal cleavage of DNA. What is internucleosomal cleavage of DNA? Between the nucleosomes. Okay, because we have nucleosome, right, binded with histone proteins and all. So in the caspases, initiation caspase are 8, extrinsic 9, intrinsic and 10 are there. Execution caspases
Third one is the most important, and sixth one is the endonucleases, a 180 to 100 base pairs DNA fragment. Caspases, they exist as procaspases and enzymatic cleavage and active caspases. So after enzymatic cleavage, they become active caspase. Presence of cleaved active caspase, marker of cells undergoing apoptosis. Marker of cells undergoing apoptosis. The cells are undergoing apoptosis, so we can get the active caspase. Factors involved in apoptosis. It can be asked as 1-mark question. So the factors involved are pro-apoptotic, anti-apoptotic, apoptotic, and the sensors. So if you see here, the factors, here you can see pro-apoptotic, anti-apoptotic, and sensors. In the pro-apoptotic factors involved in apoptosis are pro-apoptotic. So these are the enzymes, or you can say these are the factors, BAC and P53. These are responsible for the apoptosis. Okay, so you have to remember this one. Pro-apoptotic proteins, pro-apoptotic proteins, pre-apoptotic proteins, pro-apoptotic or anti-apoptotic, and the sensors. So these are the proteins you need to remember. So these are the intrinsic pathway of apoptosis. These are the factors involved in apoptosis. So pro-apoptotic proteins are BACs and BAC, also P53 and glucocorticoids. You can remember BACs and BAC. Anti-apoptotic are the BCL2, BCLXL, and MCL1. Okay, so BCL2, BCLXL, and BCL1. Okay, BCL are the anti-apoptotic. BAC and BACs are the pro-apoptotic. What are the sensors? Sensors are the BIM, BID, BAD, PUMA, NOXA. You have to remember the sensors, and sensors are BIM, BID, BAD, PUMA, NOXA. PUMA chappal, PUMA slippers, you know. So sensors are very important to study. So what are the sensors? BIM, BID, PUMA, NOXA. BAD also. BIM, BID, PUMA, and NOXA. So these are the sensors. So once try to remember all this stuff. That is pro-apoptotic,
So BIM, BID, PUMA, NOXA are the sensors. BIM, BID, BAD, PUMA, NOXA. So these are how many? These are 1, 2, 3, 4, 5. 5 are the sensors. BCL2, BCL-XL and MCL1. 6 steroids. These are 4 and these are 4. Propeptotic bags, back. तो I'll give you a trick to remember. प्रो एपोप्टोटिक मतलब अभी एपोप्टोसिस हुआ नहीं है, बट पीछे लोग प्लान कर रहे हैं एपोप्टोसिस करने का, प्रोग्राम बना रहे हैं, राइट? पीछे बैक तो ये वाला तो याद है, क्योंकि बैक जो है वो तो प्रो एपोप्टोटिक ही रहेगा, ठीक है? एंड बैक्स भी याद कर लो, बैक या बैक्स पीछे, ओके? एंटी एपोप्टोटिक मतलब कौन रोक रहे हैं? एक्सेल वाले लोग रोक रहे हैं। तो जो एक्सेल वाले लोग हैं वो रोक रहे हैं कि मत करो एपोप्टोसिस प्लान मत करो, ठीक है? एंटी एपोप्टोटिक। एंड MCL1 ये भी बोल रहे हैं मत करो, है ना? एंड सेक्स स्टीरॉइड्स ये भी अगेंस्ट हैं एपोप्टोसिस के। Sensors BIM, BID, BAD, PUMA, NOXA. Now let's talk about the pro-apoptotic proteins. They have 4 BH, BCL, 2 homology domains. BH1, 4. Upon activation, they oligomerize with outer mitochondrial protein and promote mitochondrial outer membrane permeability. तो बेसिकली ये प्रोपोप्टोटिक प्रोटीन करते क्या हैं? क्या करते हैं प्रोपोप्टोटिक प्रोटीन? Okay, so the pre-apoptotic proteins, what they basically do is, the pre-apoptotic proteins, their function is to, what they do when they get activated, they oligomerize with outer mitochondrial protein and promote mitochondrial outer membrane permeability. So, outer membrane of the mitochondria become permeable. Outer mitochondrial membrane, they become the permeable. Outer mitochondrial membrane become permeable. Outer mitochondrial membrane, they become permeable. The pro-apoptotic, anti-apoptotic and sensors. So pro-apoptotic are what? Once write it here. Pro-apoptotic are पीछे आप प्लान कर रहे हो, प्रोग्राम कर रहे हो कि आपको क्या करना है, एपोप्टोसिस. तो दैट इज बैक्स, that is back. And P53 and glucocorticosteroids. ठीक है, आपको प्लान करना है, परफॉर्म करना है, उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स. एंटी एपोप्टोटिक क्या होते हैं गाइस? एंटी एपोप्टोटिक बेसिकली ये क्या करते हैं,
They have all 4 BH domains. Domains are they reside in automitochondrial membrane and plasma membrane and ER membrane. They prevent leakage of death-inducing proteins by keeping mitochondrial membrane intact. By keeping mitochondrial membrane intact. They prevent leakage of death-inducing proteins by keeping mitochondrial membrane intact. By keeping mitochondrial membrane intact. ठीक है? They prevent leakage of death-inducing proteins by keeping mitochondrial membrane intact. By keeping mitochondrial membrane intact. They prevent leakage of death-inducing proteins by keeping mitochondrial membrane intact. So they prevent leakage of the cytochrome C. तो जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर साइटोक्रोम सी है ना, उसको लीक होने नहीं देते हैं. लीकेज ऑफ जो प्रोटीन्स लीकेज ऑफ डेथ इंड्यूसिंग प्रोटीन्स बाय कीपिंग माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इंटैक्ट. तो एंटी एपोप्टोटिक क्या है, ये चाहते हैं कि एपोप्टोसिस ना हो. तो एपोप्टोसिस ना हो तो ये क्या करते हैं, जो डेथ इंड्यूसिंग प्रोटीन्स है साइटोक्रोम सी, उसको माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से लीक होने नहीं देते. राइट. तो दैट इज़ द एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन्स का काम. प्रोपोप्टोटिक का क्या है, वो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी बढ़ा देते हैं. जिस वजह से क्या होता है, ये जो जो डेथ इंड्यूसिंग प्रोटीन्स है साइटोक्रोम सी, ये लीक होके जा सकती है. राइट. हम बात करते हैं सेंसर्स. सेंसर्स क्या करते हैं, दे कंटेन अ सिंगल BH डोमेन. इनके पास BH डोमेन एक ही होता है. राइट. दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज BH3 ओनली प्रोटीन्स. They act as sensors of cellular stress and damage. They regulate balance between pro and anti-apoptotic factors. तो सेंसर्स क्या है, कोई तो होना चाहिए दोनों को भी बैलेंस कर दे. राइट. तो एंड सेंसर्स क्या है, सेंसर्स they regulate the balance between pro and anti-apoptotic factors. Thus they are called the arbiters of apoptosis. Arbiters of apoptosis. Mechanism of apoptosis. जो ऊपर के पॉइंट्स है ना, प्रो एपोप्टोटिक, एंटी एपोप्टोटिक एंड सेंसर्स, यू कैन राइट ऑल दीज फैक्टर्स इन दी mechanism of apoptosis. Okay, so let's talk about the apoptosis. There is a initiation phase and the execution phase. And the initiation phase, you have the intrinsic pathway and the extrinsic pathway. In the intrinsic pathway, you have the role of mitochondria, that is the pro-apoptotic proteins, anti-apoptotic proteins and sensors. Right. डेथ इंड्यूसिंग प्रोटीन जो साइटोक्रोम सी होते हैं, उनकी वो मेम्ब्रेन से बाहर निकलने के लिए उनको चाहिए प्रोपोप्टोटिक प्रोटीन्स की मदद. और एंटी एपोप्टोटिक क्या होते हैं, उसको अंदर रखते हैं. दोनों को बैलेंस करने वाले होते हैं सेंसर्स. सेंसर्स का नाम क्या होता है, बिम, बिड, बैड, पूमा, नोक्सा. प्रोपोप्टोटिक पीछे प्लान कर रहे हैं, बैक्स एंड बैक. एंटी एपोप्टोटिक का BCL2, ठीक है, BCL-XL एंड MCL1. Okay, now let's talk about the intrinsic pathway. Intrinsic pathway is also known as the mitochondrial pathway. यहाँ पे क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का पूरा रोल होता है. It is the mechanism of apoptosis mammalian cells. The most common organ affected in apoptosis, mitochondria. Normal physiological conditions में growth factors are the survival signals. Stimulate production of anti-apoptotic factors. Normally. ठीक है. BCL2, BCL-XL, MCL1 in the outer membrane of mitochondria. Maintain permeability of cell, no leakage of cytochrome C, no apoptosis. बट अगर ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस ख़राब हो जाती हैं तो क्या होता है, सेकेंड गाइस, some issue.
ओके फाइन। ओके, सो यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंज हो गए तो फिर एपोप्टोसिस हो जाता है। यहाँ पे नॉर्मली एंटी एपोप्टोटिक फैक्टर्स बनते हैं, BCL2, BCL-XL, MCL1, एंड ये आउटर मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को कम कर देते हैं एंड इससे साइटोक्रोम C लीक नहीं हो पाता, जिससे हमारा सेल एपोप्टोसिस नहीं होता। दिस इज़ द इंट्रिंसिक पाथवे। ठीक है, डिप्रीवेशन वो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में। ठीक है, अब फिर क्या बदला, डिप्रीवेशन ऑफ सर्वाइवल सिग्नल्स कम हो गए, DNA डैमेज बाय रेडिएशन इन्फेक्शन हो गया, मिसफोल्डेड प्रोटीन इंड्यूस्ड ER स्ट्रेस हो गया। ये तीन चीज़ें क्या है, उसके कॉजेस हैं। तो एक्टिवेशन ऑफ BH3 ओनली सेंसर्स और आर्बिटर्स ऑफ एपोप्टोसिस, बिम, बिड, बैड, पुमा, नॉक्सा। एक्टिवेशन ऑफ प्रो एपोप्टोटिक फैक्टर्स, बैक्स एंड बैक हो जाते हैं। फॉर्मेशन बैक्स बैक चैनल बिटवीन द इनर एंड माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। बाइंड एंड ब्लॉक फंक्शन ऑफ BCL2 एंड BCL-XL। Relative deficiency of survivors is in decline in synthesis of BCL2 and BCL-XL. So यहाँ पे तीनों फैक्टर्स मिलके लीकेज ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन, साइटोक्रोम C इन साइटोसोल। साइटोक्रोम C कंबाइंस विद एपोप्टोसिस एक्टिवेटिंग फैक्टर 1, और फिर एपोप्टोसोम व्हील लाइक हेक्सामर बन जाता है। एक्टिवेशन ऑफ कैस्पेजेस, कैस्पेजेस एक्टिवेट हो जाते हैं। कौन से कैस्पेजेस, 9 वाला, 3, 6, 7 एंड एपोप्टोसिस हो जाता है। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, एपोप्टोटिक एंजाइम्स, जिसमें हमने पढ़ा था कि एपोप्टोटिक एंजाइम्स क्या होती हैं, कैस्पेजेस होती हैं जो क्लीव प्रोटीन नियर द एस्पार्टिक एसिड रेसिड्यूज, और दूसरी होती है एक्सोन्यूक्लियस दैट प्रोड्यूस इंटरन्यूक्लियोसोमल क्लीवेज ऑफ DNA। कैस्पेजेस में इनिशिएशन कैस्पेज होता है एंड एग्जीक्यूशन कैस्पेज होता है। इनिशिएशन में 8 एक्सट्रिंसिक रहता है, 9 इंट्रिंसिक है और 10 रहता है। एग्जीक्यूशन में 3, 6, 7, 3 वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एंडोन्यूक्लियस में 180 to 200 बेस पेयर्स DNA फ्रैगमेंट्स बनते हैं, क्लीव होते हैं 180 to 200, क्योंकि एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर्स होते हैं। तो न्यूक्लियोसोम के पास से क्लीव होता है ना, तो इस तरह से 180 to 200 जाते हैं। Mitochondrial proteins in cytosol C apoptosis activating factor, activation of caspase 9 जो वो है initiation phase, and activation caspase 3, 6, 7 and apoptosis is done। तो यहाँ पे क्या होता है, 3 सिग्नल्स होते हैं। वन इज डिप्रीवेशन ऑफ सर्वाइवल सिग्नल्स कम हो जाते हैं। ठीक है, एक्टिवेशन ऑफ BH3 ओनली सेंसर्स होते हैं। DNA डैमेज बाय रेडिएशन इन्फेक्शन हो गया, मिसफोल्ड प्रोटीन जिसकी वजह से ER स्ट्रेस हो रहा है, इंड्यूस्ड मिसफोल्डेड प्रोटीन इंड्यूस्ड ER स्ट्रेस हो जाता है। बिम, बिड, बैड आर्बिटर्स ऑफ एपोप्टोसिस। एक्टिवेशन ऑफ प्रो-एपोप्टोटिक फैक्टर्स, फॉर्मेशन ऑफ बैक चैनल बिटवीन इनर एंड माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। बाइंड एंड ब्लॉक फंक्शन ऑफ BCL2 एंड BCL-XL, सेंसर्स अपना काम करते हैं। एंड रिलेटिव डेफिशिएंसी ऑफ सर्वाइवल सिग्नल्स होने के बाद डिक्लाइन इन सिंथेसिस ऑफ BCL2 एंड BCL-XL, दैट इज एंटी एपोप्टोटिक वाले कम हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द डिप्राइव्ड इन सर्वाइवल सिग्नल। इस तरह से माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन साइटोक्रोम C लीक होगा एंड साइटोक्रोम C जाके कंबाइन करेंगे APAF एपोप्टोटिक एक्टिवेटिंग फैक्टर 1 के साथ, फिर एपोप्टोसोम बनेगा। ठीक है, डन। तो ये हो गया हमारा इंट्रिंसिक पाथवे। अब बात करते हैं एक्सट्रिंसिक पाथवे, फिर इनहिबिटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे ना इंट्रिंसिक मतलब बहुत इंटरेस्टिंग था ना इंट्रिंसिक पाथवे, किस तरह से प्रो एंड एंटी एपोप्टोटिक फैक्टर्स एंड सेंसर्स काम कर रहे थे। डिड यू गेट दिस? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, राइट? यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे भी बोलते हैं इंट्रिंसिक पाथवे। Now let's talk about extrinsic pathway, also known as death receptor mediated pathway. ठीक है, is initiated by external signals. So it is initiated by engagement of plasma membrane death receptors. Plasma membrane, many cells express death receptor molecules on the surface of plasma membrane to trigger apoptosis. डेथ रेसेप्टर्स मीडिएटेड पाथवे है। तो जो सेल ना
जो सेल के प्लाज्मा, जिस सेल को मरना रहता है, सुसाइड करना रहता है ना, वो अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक रिसेप्टर बना लेता है। इससे पता चलता है सेल को एपोप्टोसिस करना है। ठीक है, वायरस से इन्फेक्टेड हो गया है, ये कुछ हो गया है सेल को। डेथ रिसेप्टर्स मेम्ब्रेन ऑफ TNF रिसेप्टर फैमिली। तो डेथ रिसेप्टर्स क्या है? वेल नोन डेथ रिसेप्टर्स है टाइप 1, टाइप 1 TNF receptors related protein called FAS. तो essential for delivering apoptotic signals involved in डेथ रिसेप्टर्स क्या है? मेम्ब्रेन ऑफ TNF रिसेप्टर फैमिली, टाइप 1 TNF रिसेप्टर्स। ठीक है, मेंबर ऑफ TNF रिसेप्टर फैमिली, दैट इज द टाइप 1 वाला, टाइप 1 TNF रिसेप्टर। साइटोप्लाज्मिक डोमेन और डेथ डोमेन में इन्वॉल्व इन प्रोटीन इंटरैक्शंस फॉर डिलीवरिंग एपोप्टोटिक सिग्नल्स, एग्जाम्पल टाइप 1 TNF रिसेप्टर एंड फास्ट CD95। तो दो हैं बेसिकली आपको याद रखने के, दैट इज द टाइप 1 TNF रिसेप्टर एंड फास्ट CD95। So these are the well-known death receptors. Fast death receptor is expressed on many cell types, and the binding ligands for fast is called fast ligand. Fast on cells target fast ligand on T cells and T lymphocytes. Fast on cells target cells fast ligand on T cells and T lymphocytes. More than 3 molecules of fast brought together. The cytoplasmic domain form a binding site of adapter protein FADD. Fast associated death domain. Activation of caspase 8-10 via death domain of FADD. Activation of caspase 3-6-7 and apoptosis. तो बेसिकली होता क्या है? Fast on cells target cell, fast on cells target cells interaction fast ligand on T cells and T lymphocytes. So basically क्या हुआ, जो fast CD95 है ना, सेल्स टारगेट सेल्स, फास्ट ऑन सेल्स टारगेट सेल्स इंटरैक्ट होते हैं, फिर क्या होता? फास्ट लाइगेंड ऑन T सेल्स एंड T lymphocytes हो जाता। मोर देन 3 molecules of fast brought together. The cytoplasmic domain form a binding site of adapter protein. Fast associated death domain बनता। Activation of caspase 8-10 via death domain of FADD. Caspase 3-6-7 and apoptosis. 3-6-7 जैसे एक्टिवेट हुआ कैस्पेस, एपोप्टोसिस हो गया। जब फास्ट क्या करता है, अपने लाइगेंड को बाइंड करता है, CD95 लाइगेंड, तो ये जो एक्सट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेट होता है व्हेन फास्ट लिगेंड बाइंड्स टू फास्ट रिसेप्टर्स। अब फास्ट लिगेंड फास्ट रिसेप्टर को बाइंड किया, दिस साइटोप्लाज्मिक डेथ डोमेन बाइंड्स विद एन एडेप्टर प्रोटीन। फास्ट लाइगेंड फास्ट रिसेप्टर के साथ बाइंड हुआ, फास्ट लाइगेंड फास्ट रिसेप्टर के साथ साइटोप्लाज्मिक डेथ डोमेन बनाया लोग, फिर वो क्या किया, एडेप्टर प्रोटीन से बाइंड किया, एडेप्टर प्रोटीन, फिर एडेप्टर प्रोटीन कंटेन्स अ डेथ डोमेन एंड इज कॉल्ड फास्ट एसोसिएटेड डेथ डोमेन। फिर फास्ट एसोसिएटेड डोमेन FADD in turn binds to procaspase 8 and inactive form of caspase 8 via a death domain and generate active caspase 8. Active caspase 8 mediate the execution phase of apoptosis, जहाँ पे 3-6-7 एक्टिवेट होंगे। जब 3-6-7 एक्टिवेट होता है तो होता है हमारा एपोप्टोसिस। The mitochondrial pathway activates initiator caspase 9 and the death receptor pathway activates initiator caspase 8. जो इंट्रिंसिक पाथवे था वो
कैस्पेस 9 को करता है एंड जो ये वाला है 8 को करता है। ये याद रखने की बात है। द इनिशियल कैस्पेस एक्टिवेट other series of caspases called executional caspase. Caspase 3-6 mediates the final phase of apoptosis. On many cellular components activate DNAs which induce fragmentation of nuclei. Execution caspases. Caspases also degrade components of nuclear matrix cytoskeleton resulting in fragmentation of involved cells. Intrinsic and extrinsic pathway. Extrinsic pathway. Fast signaling produce caspase 8. Activation of BH3 only protein BID. Intrinsic pathway. तो जो इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक पाथवे है ना, एक्सट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है, फास्ट सिग्नलिंग प्रोड्यूसेस कैस्पेस 8, एक्टिवेशन BH3 ओनली बिड. इंट्रिंसिक पाथवे. तो यहाँ पे क्या होता है, इंट्रिंसिक पाथवे के साथ जाता है क्योंकि यहाँ पे कैस्पेस 8 फिर एक्टिवेशन 367 apoptosis. It occurs in hepatocytes and pancreatic beta cells. तो जो पैंक्रेटिक बीटा सेल्स हैं, हेपेटोसाइट्स हैं, वहाँ पे इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक पाथवे दो भी होता है. The combined activity of both pathways deliver a fatal blow to the cells. तो मर जाते हैं सेल्स, राइट. ठीक है. अब हम बात करते हैं इनहिबिटर्स ऑफ एपोप्टोसिस, जो नहीं चाहते एपोप्टोसिस हो. इनहिबिटर ऑफ एक्सट्रिंसिक पाथवे दैट इज फ्लिप. यहाँ पे डेथ डोमेन बनता है ना, फास्ट रिसेप्टर्स होते हैं, फास्ट डेथ डोमेन बनता है फास्ट लाइगेंड के साथ. तो यहाँ पे इनएक्टिवेट्स कैस्पेस 8, उसको इनएक्टिवेट कर दी. लैक्स प्रोटीज डोमेन कांट क्लीव एंड एक्टिवेट कैस्पेस. प्रोटीज डोमेन को ख़त्म कर देते हैं जिस वजह से क्लीव एंड एक्टिवेट कैस्पेस नहीं हो पाता. इनहिबिटर्स ऑफ इंट्रिंसिक पाथवे, फिजियोलॉजिकल इनहिबिटर्स ऑफ एपोप्टोसिस IAP, इनएक्टिवेट कैस्पेस प्रो कैस्पेस 9. एग्जीक्यूशनल कैस्पेसेस लाइक कैस्पेस 3, 6, 7 रहता है ना, 3 को इनएक्टिवेट कर दिया. यूटिलाइजेस बाय SMAC Diablo which enters the cytoplasm through back channel. SMAC and Diablo वो क्या करते हैं, बैक चैनल जो आउटर इनोमाइटोकॉन्ड्रिया के बीच में बनता है उसको ब्लॉक कर देते हैं. इस तरह से इनहिबिटर ऑफ इंट्रिंसिक पाथवे. एक्सट्रिंसिक पाथवे कैस्पेस प्रो कैस्पेस 8 को ब्लॉक इनएक्टिवेट करने की वजह से लैक्स प्रोटीएज डोमेन कांट क्लीव एंड एक्टिवेट कैस्पेस. एग्जीक्यूशन फेज में क्या होता है, ये इंट्रिंसिक पाथवे है, ये वाला एक्सट्रिंसिक पाथवे है. इंट्रिंसिक पाथवे में एक्टिवेशन ऑफ कैस्पेस 9, एक्सट्रिंसिक पाथवे में एक्टिवेशन कैस्पेस 8. एक्टिवेशन ऑफ कैस्पेसेस 3, 6, 7. क्लीव इनहिबिटर्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक DNAs, degrade structural components of nuclear matrix. DNA is enzymatically active, cleavage of DNA, fragmentation of nuclei. इंट्रिंसिक पाथवे में एक्टिवेशन ऑफ कैस्पेस 9 होता है, एक्सट्रिंसिक में कैस्पेस 8 होता है. फिर एग्जीक्यूशन में क्या होता है, एक्टिवेशन ऑफ कैस्पेस 3, 6, 7 दोनों में भी, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक. फिर क्लीव इनहिबिटर ऑफ साइटोप्लाज्मिक DNA एंजाइमेटिकली एक्टिव हो जाते हैं. फिर क्लीवेज ऑफ DNA. तो ये 3, 6, 7 इनहिबिटर ऑफ साइटोप्लाज्मिक DNA को क्लीव कर देते हैं. फिर DNA एक्टिवेट होकर क्लीवेज कर देते हैं DNA का. डिग्रेड स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियर मैट्रिक्स, फ्रैगमेंटेशन ऑफ न्यूक्लियस. ठीक है, डिग्रेड स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स. तो ये इंट्रिंसिक पाथवे. एक्सट्रिंसिक पाथवे फाइनल है तो एक्टिवेशन ऑफ 3, 6, 7. Apoptotic cells and their fragments. Changes in their membrane actively promote phagocytosis. Cells cleared before they undergo secondary necrosis and release cellular contents.
तो अब हम बात करते हैं रिमूवल ऑफ डेड सेल कैसे होता है। तो अपोप्टोटिक, ऑडिबल राइट? तो अपोप्टोटिक सेल्स एंड देयर फ्रैगमेंट्स चेंजेस इन देयर मेम्ब्रेन, अपोप्टोटिक सेल्स और उनके फ्रैगमेंट चेंजेस इन देयर मेम्ब्रेन एक्टिवली प्रमोट फागोसाइटोसिस, cells cleared before they undergo secondary necrosis and release cellular contents। सेकेंडरी नेक्रोसिस नहीं होता है और सेलुलर कंटेंट्स रिलीज हो जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली जो भी सेल्स हैं फ्रैगमेंट होने के बाद उनके मेम्ब्रेन का फ्रैगमेंटेशन होता है, फिर फागोसाइटोसिस एंड सेकेंडरी नेक्रोसिस होने से पहले ख़त्म। अपोप्टोटिक बॉडीज क्या होता है, ब्रेक सेल्स इनटू बाइट साइज्ड फ्रैगमेंट्स, थ्रोम्बोस्पोंडिन adhesive glycoprotein, they are coated by thrombospondin adhesive glycoprotein, natural antibodies and protein of complement system, that is C1q. These are recognized by phagocytosis. Cells dying by apoptosis secrete soluble factors liquid phagocytosis. Creatures produce proteins bind to apoptotic cells, not live cells. Target dead cells for engulfment. Receptors from phagocytosis, ligands on apoptotic cells, eat me signals देते हैं, binding and engulfment of apoptotic cells. Morphological features of apoptosis: cell shrinkage, chromatin condensation. Cell shrinkage earliest feature, cytoplasm is dense, organelles are relatively normal and more tightly packed. तो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स में सेल श्रिंक होता है, नेक्रोसिस में स्वेल हो जाता था कभी, है ना, केसिस नेक्रोसिस, कोएगुलेटिव नेक्रोसिस, लिक्विफैक्टिव। यहाँ पे सेल श्रिंकेज होता है, अर्लीस्ट फीचर, साइटोप्लाज्म डेंस हो जाता है, ऑर्गेनल्स relatively normal and more tightly packed. Chromatin consists more characteristic feature. The chromatin aggregates peripherally under the nuclear membrane. The aggregates form dense masses of various shapes and sizes. The nucleus may break up into two or more fragments. Formation cytoplasmic blebs and apoptotic bodies. Cytoplasmic blebs on membrane and pinches of blebs बनते pinch off हो जाते हैं. Born apoptotic bodies ingested by the phagocytes. Degraded by lysosomal enzymes. Apoptotic bodies क्या है? Composed of cytoplasm, tightly packed organelles with or without nuclear fragments. Plasma membrane remains intact, no leakage of enzymes. At least later stages of plasma membrane becomes permeable to normally retained solutes. Physiological features: apoptotic cells appear as a round or oval mass of intensely eosinophilic cytoplasm with fragments of dense nuclear chromatin. Apoptosis does not elicit inflammation, difficult to detect histologically.
Biochemical features. ATP is required energy dependent process. Now let's talk about the biochemical features. तो एक चीज़ है कि एल्सिट इन्फ्लेमेशन नहीं होता, सेल्स खुद करा रहा है तो इन्फ्लेमेशन क्यों कराएगा, कोई बाहर से करा था तो इन्फ्लेमेशन होता, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन नहीं होता है. तो दैट इज़ द डिफरेंस. apoptosis और नेक्रोसिस में बायोकेमिकल फीचर्स. एटीपी इज रिक्वायर्ड, एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है ये. देयर इज अ ट्रांसिएंट लॉस ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पोटेंशियल. पीएच ऑफ द सेल इज एसिडिक. कैस्पेस डिपेंडेंट. एक्सटीरियोरेशन. ठीक है. So it is caspase dependent. There is exteriorization phosphatidylserine from inner to outer leaflet of the plasma membrane. phosphatidylserine flip होता है यहाँ पे. caspase dependent. pH of the cell acidic होता है. non random mono and oligonucleosomal length fragment of DNA step ladder pattern. agarose gel electrophoresis. DNA fragments is pre-lytic. Dysregulated apoptosis. Defective apoptosis and increased cell survival. apoptosis ही नहीं हो रहा है, सेल ज़्यादा दिन तक जिएगा. म्यूटेशन TP53 डिफेक्टिव DNA रिपेयर एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूटेशंस एंड कैंसर हो जाता है. प्रोसेस ठीक से नहीं हुआ, कैंसर हो जाएगा. ऑटोइम्यून डिजीजेस फेलियर टू एलिमिनेट. lymphocytes react against self-antigen. dead cell source of self-antigen. autoimmune diseases हो जाते हैं, कैंसर हो जाता है. यहाँ पे TP53 में म्यूटेशन हुआ, डिफेक्टिव DNA रिपेयर एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूटेशंस. apoptosis हो ही नहीं रहा है, कैंसर हो रहा है. autoimmune diseases lymphocyte सेल्फ एंटीजन को नहीं पहचान पा रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं. dead cells source of self antigens. increased apoptosis and excessive cell death. Neurodegenerative diseases, loss of specific set of neurons, mutations and misfolded proteins, apoptosis, ischemic injury, myocardial infarction, stroke, viral infections, death of virus infected cells. Types of degeneration, that is cell injury. रिवर्सिबल रहता है, इरिवर्सिबल रहता है. रिवर्सिबल में सेल स्वेल हो गया, स्टीटोसोसिस, एपोप्टोसिस, नेक्रोसिस, नेक्रोप्टोसिस एंड पैरोप्टोसिस. स्टीटोसिस. रिवर्सिबल में सेल स्वेलिंग में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया अफेक्ट होता है. एटीपी प्रोडक्शन कम, माल फंक्शन ऑफ सोडियम पोटेशियम एटीपी इज फॉर्म बिकॉज दे रिक्वायर एटीपी. इंट्रासेलुलर accumulation of sodium, water enters the cell, cell swell हो गया easily, and blood formation, loss of villi, entry of water into phospholipid layer leading to partial degeneration, leading to cellular curling of membrane upon itself called myelin figures. Here decreased decellular accumulation of misfolded proteins. Lactic acidosis due to decreased glycolysis. Cetosis is fatty chains. Cetosis.
Abnormal accumulation of triglycerides with parenchymal cells, the most common organ affected in liver, as it is more involved in fat metabolism. Heart muscular are also a factor cause of cirrhosis, as certain toxins, proteins, malnutrition, obese mellitus, obesity, and anorexia. Fat stains. Sudan, ये अच्छा याद रखना. Sudan black stains, oil red or stain reddish orange. Sudan 3 stain red to yellowish. Sudan black B stains black. Irreversible injury apoptosis, castrate mediated program cell injury. Death of tissue. Irreversible injury causes